Memorandum of Understanding between the Ministry of Investment, Regional Development and Informatization of the Slovak Republic and the Ministry of Electronics and Information Technology of the Government of the Republic of India on cooperation in the field of digital technologies. For Slovakia, Mr. Radomír Šalintroš, State Secretary, Ministry of Investment, Regional Development and Informatization of the Slovak Republic. For India, Mr. Bikram Misri, Foreign Secretary, Ministry of External Affairs of the Republic of India. Ďakujeme pekne. Memorandum o porozumení medzi Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí vlády Indickej republiky o spolupráci v oblasti pracovnej mobility. Za Slovenskú republiku Marian Valentovič, štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Za indickú stranu Sibi George, štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí. Memorandum of Understanding on Labor Migration between the Ministry of Labor, Social Affairs and Family of the Slovak Republic and Ministry of External Affairs, Republic of India. For Slovakia, Mr. Marian Valentovič, State Secretary, Ministry of Labor, Social Affairs and Family of the Slovak Republic, and for India, Mr. Sibi George, Secretary, Ministry of External Affairs. Ďakujem veľmi pekne. Memorandum o porozumení medzi Ministerstvom školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva Indickej republiky o spolupráci v oblasti vysokoškolského vzdelávania a výskumu si za Slovenskú republiku vymieňa Robert Žembera, štátny tajomník Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže, a za indickú stranu Sibi George, štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí. Memorandum of Understanding on Cooperation in Higher Education and Research between the Ministry of Education, Research, Development and Youth of the Slovak Republic and Ministry of Education, Republic of India. For Slovakia, Mr. Robert Žembera, State Secretary for Higher Education and Academic Research, Ministry of Education, Research, Development and Youth of the Slovak Republic. And for India, Mr. Sibi George, Secretary, Ministry of External Affairs. Ďakujeme veľmi pekne. Memorandum o porozumení v oblasti audiovizuálnej tvorby medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Ministerstvo informatizácie a vysielania Indickej republiky na obdobie rokov 2026 až 2030. Za Slovenskú republiku Mário Maruška, štátny tajomník Ministerstva kultúry. Za Indickú republiku Apurva Srivastava, veľvyslankyňa Indickej republiky v Slovenskej republike. Memorandum of Understanding on Audiovisual Cooperation between Ministry of Culture of the Slovak Republic and Ministry of Information and Broadcasting of the Republic of India. For Slovakia, Mr. Mário Maruška, State Secretary, Ministry of Culture of the Slovak Republic, and for India, Her Excellency, Madam Apurva Srivastava, Ambassador of India to the Slovak Republic. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne všetkým predstaviteľom a teraz by som poprosil predsedu vlády Slovenskej republiky Roberta Fica o vyhlásenie. Vaša Excelencia. Your Excellency, distinguished Prime Minister, welcome together with your delegation in Slovakia and feel yourself at home in our country. Slovak Republic and India are countries which are connected by a number of common topics and common opinions. Here in the presence of both Slovak and Indian delegation and also in the presence of media, I would like to congratulate you, warmly congratulate India to fantastic results which you are achieving. Distinguished ladies and gentlemen, it's a great honor for me as a Prime Minister of a small country with 5.5 million inhabitants, it's a great honor for me to welcome in Slovakia the Prime Minister of the country with the largest population in the world. But at the same time, a country which is the 5th biggest economy in the world,
and it has the ambition to be the third biggest economy in the world. Distinguished Prime Minister, I congratulate you to the results in all areas which you have achieved. Allow me to mention one area where you dominate, actually. It's the field of digitalization and the use of artificial intelligence. You've come so far that you're actually faster than Western countries from Western Europe, like France or Germany. You're ahead of many other advanced countries in different parts of the world. I would like to congratulate you to economic growth, which is amazing. European Union, what would European Union do if it could achieve 6 or 7% growth? Unfortunately, we're struggling in the European Union with the question of competitiveness, which is in conflict with too ambitious climate goals. So we have a big homework in the European Union to make sure that other regions in the world, including your country, so that they're not that fast that would overtake us so fast in the European Union. When I said that we have common opinions, I'd like to highlight 3 issues. With great respect, I follow sovereign attitudes and positions of India, and me as the Prime Minister of Slovak Republic, I pursue a sovereign foreign policy of Slovakia oriented on all 4 cardinal points. With great respect, I follow how international law, how important it is to you. Only if we comply with the international law, only in that way we'll be able to resolve conflicts and wars. And we also share the same opinion when it comes to the importance of multilateralism in international politics. I would like to publicly declare that the government of the Slovak Republic supports a reform of the United Nations, and we're strongly convinced that countries like India have to be, I will repeat this, they have to be the part of the Security Council of the United Nations as permanent member. Obviously, I cannot omit political stability, which you represent, Mr. Prime Minister in India, and I congratulate you to the fact that you're the longest serving Prime Minister in India, because consecutively for 12 years in such a difficult environment, when you have so many political parties, it's such a comprehensive environment, this is like a political miracle, and I want to congratulate you to this. Distinguished Prime Minister, ladies and gentlemen, Slovakia welcomes the fact that an agreement was reached between EU and India when it comes to free trade. It's one of the most ambitious free trade agreements which have ever been signed. And Slovakia is a country which not only welcomes this agreement, but will do all necessary and practical steps that this agreement is implemented as fast as possible. If someone asks us a question, why do we welcome this agreement, I will tell you one factor. We have a high concentration of car production in Slovakia. And this is one of the areas where agreement was agreed on 10% duties. So this agreement is beneficial for Slovakia. On the other side, distinguished Prime Minister, I will repeat the invitation for investors from India to come to Slovakia. You have companies, reference companies, which can confirm the fact that in spite of the fact that we have a very lively democratic system, we are a stable country which can provide investors all over the world favorable conditions. And similarly, as you said in our conversation, I like PPP projects, so the public-private partnerships, so initiatives like that will be welcome in Slovakia. Today, we agreed with the Prime Minister
on elevating the cooperation between Slovakia and India to a cooperation which we can call comprehensive or strategic collaboration. It's a matter of fact that the participation of the Prime Minister of the biggest country in the world and the big delegation in Slovakia elevates our cooperation to a higher level. Politically, after the visit of Madam President, we welcome the Prime Minister. Slovak President visited India, and I thank you very much, very warmly for the invitation which you've extended to me a few minutes ago to visit India. I'm delighted to accept this invitation, and I will be well prepared for such a trip because I know that this will be another important moment to strengthen further our relationships. The list of agreements, memoranda of understanding or letter of intent, vyhlásenie o zámere, confirms what we want to focus on. I see 2 or 3 areas which I'd like to highlight, and I'd like to mark them as the topics for the Prime Minister, dear Prime Minister, and I would like to ask you to support these topics within our mutual cooperation. It's first of all the area of exchange of experience when it comes to digitalization and use of AI. You're becoming the world leader, and Slovakia is interested, and therefore I will ask the respective ministry to be active and to use this possibility. I'm also interested in a cooperation in the field of defense industry, where we have quite a lot of opportunities. Those who want to do a sovereign policy have to ensure its own protection and defense, and therefore I fully understand this collaboration and I will support it. Thank you, distinguished Prime Minister, for the invitation for experts who deal with the nuclear programs, civil, peaceful nuclear programs. We'll be delighted if our experts can come. We consider ourselves to be top in this area, so if they can share experience with your experts, which we have acquired during many years of operation of nuclear power plants in Slovakia. Our cooperation also has a human dimension in Slovakia because we lack a number of employees. So we have people from India working in Slovakia. For this reason, I welcome the agreement between respective ministries when it comes to ensure social security and social protection for these employees. There are more than 600 students from India in Slovakia. Our relationships are developing when it comes to the culture. So we care about these topics, about these things, because since we have no political obstacles, we have common opinions of various issues, and at the same time it's important to focus on mutually beneficial cooperation. Our mutual trade is increasing. It's actually 5 times higher compared to the situation from a few years ago, but there's still more options, more possibilities for Slovak economy and obviously the huge potential of your country. Distinguished Prime Minister, from my heart, I thank you not only on behalf of Slovak delegation, but I thank you on behalf of the whole Slovak Republic, that with the demanding agenda which you have as the Prime Minister of a country which 1.5 billion citizens. Thank you for coming to Slovakia and honoring a small country like Slovakia with your visit. We're a proud country, we're a sovereign country, and in spite of the fact that we're a small country, I believe that we can give something to the world. And I'll do everything that the mission which I am the head of, as the Prime Minister of a small sovereign country, that this mission is fulfilled. Welcome to Bratislava. Welcome to Slovakia, distinguished Prime Minister. Predseda vlády Indickej republiky. Now the Narendra. Your Excellency, Prime Minister Fico, दोनों देशों के डेलीगेट्स,
मीडिया के साथियों, नमस्कार। दोबरी दिन। हमारे आत्मीयता भरे स्वागत के लिए मैं प्राइम मिनिस्टर फिको का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। वे अनुभवी लीडर होने के साथ साथ भारत के सच्चे मित्र हैं। भारत स्लोवाकिया संबंधों को नई ऊंचाई तक पहुंचाने में उनकी मित्रता और अटूट प्रतिबद्धता का विशेष महत्व रहा है। मुझे खुशी है कि आज उनसे मिलकर मुझे हमारे संबंधों में एक ऐतिहासिक पल के साक्षी बनने का सुअवसर मिला। मेरी ये यात्रा किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा है। मुझे खुशी है कि इस ऐतिहासिक अवसर पर हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। यह हमारे साझा विश्वास, साझा प्राथमिकताओं और साझा भविष्य का प्रतीक है। फ्रेंड्स, आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। हमारे द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग में हो रही प्रगति हमारे लिए संतोष का विषय है, लेकिन हमारी क्षमताएं विशाल है, हमारी आकांक्षाएं उससे भी बड़ी है। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज हमारे लिए विशेष रुचि के क्षेत्र हैं। इन सभी विषयों में आज हमने अपनी ताकतों को जोड़कर दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। इंडिया EU FTA को अंतिम रूप देने में स्लोवाकिया से मिले सहयोग के लिए मैं प्रधानमंत्री जी का विशेष आभार व्यक्त करता हूं। हम इसके जल्द से जल्द इम्प्लीमेंटेशन के लिए काम करेंगे ताकि दोनों देशों के उद्योग, स्टार्टअप्स और ट्रेडर्स इसका अधिकतम लाभ उठा सके। फ्रेंड, टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए MOU इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में AI के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। AI मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है। हमारा मानना है कि AI का भविष्य केवल इनोवेशन से नहीं बल्कि ट्रस्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी और ह्यूमन डिग्निटी पर आधारित होना चाहिए। हमारे बीच स्पेस के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का बहुत बड़ा पोटेंशियल है। 2017 में स्लोवाकिया की पहली सैटेलाइट भारत द्वारा लॉन्च की गई थी। आज भारत में स्पेस सेक्टर अभूतपूर्व गति से नई ऊंचाइयां छू रहा है। मैं स्लोवाकिया की कंपनियों को इस विकास यात्रा में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता हूं। सिविल न्यूक्लियर एनर्जी भी दोनों देशों के लिए मुख्य प्राथमिकता का क्षेत्र है। हमने इस क्षेत्र में दोनों देशों की इंडस्ट्रीज और एक्सपर्ट्स के बीच सहयोग बढ़ाने पर बल दिया।
रक्षा सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास और स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस का प्रमाण है। मुझे खुशी है कि इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में आज हमने लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया। इससे जॉइंट डेवलपमेंट, जॉइंट प्रोडक्शन और डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी। फ्रेंड, वैश्विक मंच पर भी भारत और स्लोवाकिया करीबी सामंजस्य से आगे बढ़ रहे हैं। हम सहमत हैं कि सभी विवादों और तनावों का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए। हम सभी पार्टनर्स के साथ मिलकर इस दिशा में आगे बढ़ते रहेंगे। हम इस बात पर भी सहमत हैं कि वैश्विक संस्थानों को 21वीं सदी की वास्तविकताओं और चुनौतियों के अनुरूप खुद को रीडिफाइन करना होगा। इस विषय पर हम वैश्विक प्रयासों को सशक्त बनाने की दिशा में काम करेंगे। फ्रेंड, दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक और पीपल टू पीपल टाइज हमारे संबंधों को मजबूत आधार प्रदान करते हैं। भारत के प्राचीन उपनिषदों का स्लोवाक भाषा में अनुवाद किया जाना हमारी सांस्कृतिक निकटता का उत्कृष्ट उदाहरण है। स्लोवाकिया में रह रहे भारतीय मूल के लोग यहां की इकोनॉमी और सोसाइटी में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। दोनों देशों के बीच प्रोफेशनल्स और स्किल्ड वर्कर्स की मोबिलिटी बढ़ाने के लिए आज हमने लेबर माइग्रेशन पर एमओयू की घोषणा की है। हम शीघ्र ही सोशल सिक्योरिटी पर एमओयू को भी अंतिम स्वरूप देंगे। एक्सेलेंसी, आज की अत्यंत सार्थक चर्चा और भारत के लिए आपकी सकारात्मक सोच के लिए मैं एक बार फिर आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं 140 करोड़ भारतीयों की तरफ से आपको भारत आने का निमंत्रण देता हूं और मुझे खुशी है कि आपने सार्वजनिक रूप से भी इस निमंत्रण का स्वीकार किया है। हम आपका स्वागत करने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं। मुझे विश्वास है कि हमारी कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप आने वाले वर्षों में नए अवसरों, साझा समृद्धि और हमारे लोगों के उज्जवल भविष्य का आधार बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Ďakujeme pekne za vašu pozornosť. Dovidenia. स्लोवाकिया से साझा प्रेस वक्तव्य का सीधा प्रसारण आप देख रहे थे। तो भारत स्लोवाकिया साझेदारी को आज एक नई उड़ान मिल गई है। तमाम क्षेत्र हैं, दोनों देशों के बीच अहम समझौते हुए हैं, जिसमें रक्षा सहयोग में समझौता ज्ञापन शामिल है। इसके साथ ही आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो भी
కలహాలతో మనోవేదనకు వివాహిత